So we'll now start our discussion. अभी तक हम चर्चा करते आ रहे हैं एक एक करके, पहले रूप के आस्वादन के प्रति, फिर रूप के आदिनव को, और आज हम रूप के निस्सरण को जानने का क्या तरीका होगा, क्योंकि इन तीनों के आधार पे ही भौतिक पदार्थ के प्रति निर्वेद भाव, वैराग्य और निरोध की ओर हम बढ़ पाएंगे। तो निस्सरण का क्या तात्पर्य है, जैसे कई बार आ चुका है, रूप के प्रति जो राग है उसको हटाना, उसका समाप्त करना। यो रूपस्मिन् छंद राग विनयो छंद राग पहानम। तो विनय से तात्पर्य हुआ कि दूर करना, जब वो जाग जाए तो उसको हटा दें या जागने से रोकने की कोशिश करें इंद्रिय संवर के माध्यम से। और पहान का मतलब है पूरी तरह से समाप्त कर देना, ताकि वो फिर जाग ही ना पाए, तो उसके जो अनुशय क्लेश है उसका ही उन्मूलन कर दिया जाए। तो ये एक प्रश्न आज हमारे सामने रहेगा ब्रेकआउट सेशंस में, कि हम सब ने जो अपने अपने आस्वादन आइडेंटिफाई किए, उनके प्रति डेंजर को समझा, अब उनके प्रति जो राग है उसका कैसे रोका जाए और कैसे उसका प्रहान किया जाए। काफी हद तक हम इस बारे में काफी चर्चा करते रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग की, अन्य स्पेसिफिक reflective meditations for specific nature of craving. मुझे लगता है कि we should be able to discuss it in the breakout rooms, और कुछ कमी होगी तो फिर हम मेन सेशन में आके उस पर चर्चा कर लेंगे। तो ब्रेकआउट रूम मैंने बना ही दिए है, और उसमें जो को होस्ट बनाए 3 लोगों को, ताकि वो रिकॉर्डिंग कर सके, दीपक त्यागी जी और गीता लाल और अरण्य विहार ट्रस्ट है। ये 3 अलग अलग ग्रुप्स में है, रूमों में, तो आपस में रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और जो कोऑर्डिनेशन का काम करना है, रिपोर्टिंग करने के लिए, रूम 1 में मैं दीपक सूरी जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। रूम 2 में राजेंद्र काचरू जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। और रूम 3 में अरण्य विहार ट्रस्ट है, निखिल हैं, वो कृपया इस काम को कर लें। तो मैं सभी अलॉट कर देता हूँ सबको ऑटोमेटिकली। सर एक छोटा सा प्रश्न है। आपने बोला पहान करने से पहले क्या बोला था, जो आपने कहा था? विनय, छंद राग विनय हो, मतलब जब वो अराइज हो तो उसको दूर कराने का जो सम्यक व्यायाम जो है हमारा, ताकि उसको दूर कर सकें या उसको रोक सकें बाय इंद्रिय संवर। और प्रहान का मतलब है कि उसको कंप्लीटली अप्रूट कर दें। ओके ओके, ठीक है सर। ओके, तो मैं अलोकेट कर रहा हूँ सबको। So we have 770, and so we'll meet at 8 o'clock. Okay, we have enough time, 42 minutes. 8 o'clock we should assemble here.
साहब कितना टाइम है वहाँ पे इस समय? क्या कहा आपने? मैंने कहा क्या समय है वहाँ पे? वहाँ पे अभी 4:30 बजे। 4:30। जी, तो we have come back all joined here again. So let us listen to the discussions, conclusions from group 1. दीपक सूरी जी। जी, आपने बड़ा राइटली इंटरवेंशन करके हमें गाइडेंस दिया कि हम लोग जो स्पेसिफिक्स पर डिस्कस करें, जनरल बातें ना करें, क्योंकि हम लोग जनरल बातें कर रहे थे। तो वो आपका इंटरवेंशन बड़ा अच्छा रहा। तो हमारे जो ग्रुप मेंबर थे सबने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए और इट वाज ए गुड डिस्कशन एंड ऑन 1 or 2 पॉइंट्स जो हमारे एक मेंबर ने रेज किया उस पे आप ही कुछ प्रकाश डालेंगे। तो मैं 1 by 1 ब्रीफली हर एक का बता देता हूँ। विशाल जो हैं हमारे ग्रुप के यंगेस्ट मेंबर हैं, तो इनको स्पेसिफिक एक इनकी लेडी फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड है, जिसका स्वाधीन था, उन्होंने पहले भी डिस्कशन में कहा है। तो उसके बारे में जो अब थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने बताया। तो और दूसरा आस्वादन उनको यह है कि मान लीजिए बस में जा रहे हैं तो कोई ब्यूटीफुल लड़की दिखती है, तो उसके बारे में भी एक प्लेजेंट 2 एग्जांपल दिए उन्होंने। तो दोनों ही आस्वादन के कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जो पहला एक स्पेसिफिक एग्जांपल है वो स्ट्रॉन्ग आस्वादन है, और दूसरा जो है वो शॉर्ट लिव आस्वादन है कि कोई लड़की बस में दिख गई तो उसको देखते रहे और फिर उनकी अट्रैक्शन जो है, उनको लगता है कि मैं देखता रहूं, उनको प्लेजेंट फीलिंग होती है। तो ग्रुप में उनको ये हल बताया गया कि जो कोई लड़की देखते हैं बस में, जो उसके जो इमीडिएटली उसके साथ जो उनका फर्स्ट हो रहा है, उसको रोकने के लिए नजरें नीची कर लें या कुछ टाइम के लिए आंखें बंद कर लें और फिर रिफ्लेक्ट करें। और जो एक ब्यूटीफुल लड़की जिनके साथ उनका थोड़ा लॉन्ग टर्म आस्वादन चलता आ रहा है, उसके लिए वो अशुभ भावना का प्रयास भी कर सकते हैं, और ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब वो सबने मरना है, जब वो मरेगी तो वो भी जमीन पे ऐसी एक लट्ठे की तरह पड़ी होगी, तो दिल बी नो अट्रैक्शन इन हर। तो ये दोनों उनको एक डिस्कशन में पॉइंट्स निकल के आए। तो आई होप ही प्रैक्टिसेस एंड कम्स आउट ऑफ दिस आस्वादन फास्टर देन एक्सपेक्ट्स। दूसरा, दीपक त्यागी जी हमारे मेंबर, उन्होंने कहा कि उनको मदर से बड़ी अटैचमेंट है, तो उनको ये हमेशा एक फियर सा लग रहा था कि मेरी माँ कहीं मर ना जाए। तो उनको ये सुझाव दिया गया कि बेस्ट उनके लिए रहेगा कि वो मरणोत्सव सोची करें, विच कैन बी चैलेंजिंग मे बी फॉर हिम और फॉर मैनी अदर्स, कि माँ जिससे आप इतने अटैच हैं उसको इमेजिन करें कि वो डेड जमीन पे पड़ी हुई हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि वो उनको काफ़ी कन्विंसिंग वे आउट है इस फियर से निकलने के लिए, ही विल ट्राई। तीसरा, डॉक्टर अनुरागी ने कहा कुछ उनके जो आस्वादन के कारण थे वो कहते कुछ घट भी गए हैं, बट ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड सम वे आउट फ्रॉम ग्रीमानंद सुत्ता, जो उनके संज्ञाएं थी तो उसको अप्लाई करके उनको लगता है कि उनको रिलीफ हुआ। लेकिन उनके कुछ सवाल थे जो हम लोग उनको जवाब नहीं दे पाए, तो वो आपसे डायरेक्टली बात करेंगे, तो आप भी प्लीज उनको जवाब दीजिएगा। महापन्न जी ने कहा कि उनके साथ जो कंसल्ट करने आते हैं उनके धम्मा के बारे में, तो जो उनको सुझाव देते हैं, तो काफी टाइम तक उनको लगता था कि
मैं फॉलोअप करूं तो मेरे उन जो मैंने उनको सुझाव दिए हैं वो कितने इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। तो फिर उनको अब ये रियलाइजेशन हुआ कि इस फॉलोअप में कोई ज़्यादा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि जो बंदा सुझाव लेके गया इनसे, उसको अपने कर्मों के अनुसार ही समझेगा और कर्मों के अनुसार ही उसको इम्प्लीमेंट करेगा और कर्मों के हिसाब से उसको उसका फल मिलेगा। तो उनसे उनको ये उपाय न लगाया है, तो ही फील्स मोर कंफर्टेबल, इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दिस आस्वादन। मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैंने शायद पहले भी एक दो बारी कहा था, बड़े ग्रुप में या छोटे ग्रुप में, कि मेरे बड़े भाई थे मेरे से 15 साल बड़े, और जब मैं 10 साल का था तो उनकी सडनली डेथ हो गई थी। तो इट गेव मी ए वेरी सीवियर कट, और जब भी मैं उनकी डेड बॉडी इमेजिन करता था, तो बिकॉज ऑफ अटैचमेंट विद हिम, ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, एंड आई आल्सो व्हेन आई डाइड आई फाउंड कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, उनकी डेड बॉडी में इमेजिन करता हूँ। तो 60 साल तक whenever I thought of him, I was in great pain. तो अभी जो है कुछ टाइम पहले ही I think I have been able to come out because of exposure to Dhamma, कि मृत्यु तो निश्चित है और मैंने भी तो मरना है, और सब कुछ अनित्य है, सब कुछ एक लॉ ऑफ नेचर के साथ हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा ड्वेल करने की जरूरत नहीं है। तो जो तकलीफ काफ़ी कम हो गई, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है अभी। तो दिस इज माय सबमिशन ऑन माय ग्रुप। तो यू कैन काइंडली इंटरेक्ट विद डॉक्टर अनुरागी, उनका जो पॉइंट है, अभी या बाद में। Let us first listen to everybody, then take the questions. Next, group 2. Group 2 में कोऑर्डिनेटर थे राजेंद्र जी। या हमारे ग्रुप में जेके शर्मा जी और गीता जी, अदिति जी और जतिन और माई सेल्फ। तो शुरू करते हैं जेके शर्मा जी से। तो उन्होंने जो सवाल उठाया वो ये था कि वो उनको एक विचार बार बार जहन में आता है, वो ये है कि बिटवीन द स्पाउसेस इफ एनीवन गोज then what will happen to the another one, and ये विचार काफी उनको परेशान करता है कि, और ये लगता है कि पहले अगर वाइफ चली गई या पहले मैं चला गया तो ये विचार की स्थिति बदल जाएगी और उससे वो बेचैन होने लगते हैं। लेकिन अब उनको ये समझ में आएगी तो अवश्य भावी है, ये तो होना ही है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे लर्निंग बढ़ रही है और समझ में आ रही है, तो उसका भाव भी समझ में आ रहा है। तो he's saying that it's happening automatically. There is perhaps no samavayamo in it. This is part of the learning that is happening gradually over the period of time. And then Aditi ji हैं, उन्होंने भी एग्जाम्पल दी, फिर आपने बीच में इंटरवीन किया। तो then she talked specifically about, first she was talking about clothes, but then she came to her spouse and how problems were there, how she was not very happy initially, but gradually she understood what is that she has to work on it, and she यहाँ पे समावायामो काफी हुआ और उसकी वजह से एक सम्मादिठी भी हुई और समावायामो दोनों को मिला करके, and she was able to make her married life much better than what it would have been otherwise. And that effort is continuing even today. And the very thought that she has to take care of the person has completely changed the entire scenario. So that is what she was talking about. And Jatin said that he had tremendous attachment with his mother. And but gradually then a thought came to him, if my mother does not remain, फिर मैं कैसे जीऊंगा? He is quite young still, and तो इस वजह से उन्होंने फिर अपने आप को ढालना शुरू किया। And now he says that he has reached a stage where जो कुछ
उनका परसेप्शन है कि जो मेरे लिए माँ करती थी, मुझे खाना खिलाती थी या खाना देती थी, और other things, taking care of him. So he is now gradually come out of that and he is able to look after himself. So that attachment is decreasing day by day. That is what he said. And Geeta said, she gave 4 examples, and she had a lot of addiction for viewing TV programs, which she has now almost given up. Again, it's not that she has completely stopped it, but that craving which was there initially has completely gone. And again, there was a gratification from a fellow young man, but that also has, she realized gradually that this is impermanent and this is not. तो इनका ये मानना है कि जो 4 noble truths हैं, that has really helped her to evolve as far as their relationships are concerned and be very realistic. तो उसमें जो सम्मादिट्ठी और सम्मावायामो, ये दोनों being the part of 8-fold path or part of 4 noble truth, so she has been able to overcome that also. And again, an example of her father, with whom she was quite attached, and when she realized that he has to leave this world, तो gradually उनको जो attachment थी उनके प्रति, वो फिर एक realistic भाव उसमें आ गया, और यही teachings ने फिर दोबारा उनकी मदद की. और though she has the memories, and every one of us do have memories of our loved ones, even when they leave us, but now it is not disturbing her at all. And she also gave an example that she gave up the work wherein she was having problems, but there is no भाव जिसे कहें, कुछ वैर का या द्वेष का कोई भाव मन में नहीं है. So ये उनकी एग्जाम्पल्स थी. अब मेरा को मौका नहीं मिला था उस समय बात करने का, बट आई वांट टू शेयर इट नाउ. कि मेरी जो पर्सनल एग्जाम्पल है वो ये है कि रूप के प्रति मुझ में एक जबरदस्त क्रेविंग थी, और वो जो है gradually I have been able to overcome it. And या कभी कभी विचार आते हैं तो, लेकिन उस विचार को मैं यही बात अपने मन में दोहराता रहता हूँ कि we all have to leave one day and the person concerned will also leave. तो वो एक धीरे धीरे अब जो है वो भाव मन में बहुत प्रबल हो गया है, तो इसलिए वो उतनी उस पे आस्वादन अब नहीं है. That's all. आप म्यूट पर हैं. I noticed that for the specific issues which had been highlighted in the first session and in the second session, were they also taken care of, or new issues came up? पहला जो हमारा आस्वादन का सेशन थे उसमें हर एक ने कुछ आइडेंटिफाई किया था, फिर दूसरे सेशन में उसके डेंजर के बारे में चर्चा की थी. तो इस सेशन में मुझे लगा कि कुछ कई बातें शायद नहीं हो गई, पुरानी बात शायद कि नहीं हुई. Sorry, I think almost we all took the same example, what we identified and where we saw the danger. Like my father's case or TV program, पहले भी बात हुई थी, और शायद अदिति का भी last time भी she spoke about her husband, और शर्मा जी ने भी वही कहा. राजेंद्र जी was not part of a breakout room in the last 2 sessions. So I think he also has taken the same example. Okay, thank you. Group 3. जी सर, हमारे में संगीता जी का जो आस्वादन था वो शूज के प्रति था बहुत ज्यादा. उन्होंने पहले भी बताया था. तो उन्होंने बताया कि इंद्रिय संवर किया. उन्होंने वो मॉल गई,
अपने डॉटर इन लॉ के साथ उनको शॉपिंग करने दी, लेकिन वो उस एरिया में गई ही नहीं जहाँ पर शूज रखे हुए थे। विंडो शॉपिंग भी नहीं की इन्होंने। तो इंद्रिय संवर करके अपने आप को संभाल लिया। और अब उनका कहना है कि निस्सरण का भाव जो जो पहान का भाव आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मेरे को रिफ्लेक्टिव मोड में जाने से आता है। जैसे मैं 2020 में जब कोविड थे तो मेरे सारे शूज पड़े पड़े खराब ही हो गए, और मैं सोच रही हूँ कि क्या फायदा, उठाती हूँ तो कोई कटा फटा निकलता है। तो इट्स लाइक कि दिस इज यूजलेस स्टफ टू कलेक्ट। सिमिलरली उन्होंने एक नया एग्जांपल हीरे को लेकर लिया कि एक समय वो हीरे को, सॉलिटेयर को लेकर बहुत पजेसिव थी, और उन्होंने काफी प्रयत्नों के बाद उसे हासिल किया। लेकिन हासिल करने के बाद कह रही कि जब मैंने उसको देखा, देन सडनली आई स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग कि मैं इस पत्थर के लिए इतना परेशान क्यों थी। तो यू इंटरवीन एट दैट टाइम, मतलब वी आस्क्ड योर ओपिनियन एंड यू सेड कि इफ अ पर्सन रिफ्लेक्ट देन इट इज गुड, एंड समटाइम दिस काइंड ऑफ निविदा हैपेंस। तो ऐसे करके उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। और पूनम जी का जो एक आस्वादन था, उनके घर में पेट है उसके प्रति है, तो उसमें उनको आस्वादन था, फिर उनको खतरा भी दिखने लगा कि वो कैसे उसके प्रति अटैच होती जा रही है और उसमें क्या नुकसान है। तो अभी उनका कहना है कि निस्सरण का जो उनका मन में अंडरस्टैंडिंग जागी है आफ्टर दिस और डिस्कशन। पहले वो घबराती थी उसके लिए, मतलब कि उसको कुछ हो ना जाए, अब वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड है कि शी विल डू हर बेस्ट। और उसके बाद अगर कोई टफ डिसीजन भी लेना है, लेट्स से टू पुट हर डाउन, देन शी इज समवेयर रेडी काइंड ऑफ। सो दैट इज हर निस्सरण फ्रॉम द आस्वादन एंड दिस पार्ट ऑफ थिंग। और भारती आंटी ने उनका सपोर्ट किया। एक्चुअली भारती आंटी ने बोला कि उनके साथ भी पुराने समय में ऐसा वाकया हुआ है, एक डॉग के बारे में बताया, एंड देन उन्होंने बोला कि उन्होंने उसको, उस डॉग को फाइनली पुट डाउन किया। बहुत वो कष्ट में था, बाद में उनको थोड़ा बुरा लगता रहा, लेकिन इट वाज द बेस्ट डिसीजन। तो काइंड ऑफ उन्होंने सपोर्ट किया। और अपूर्व मिश्रा जी ने पहली बार ज्वाइन किया था, तो वो परसेप्शन के बारे में कुछ बता रहे थे, तो हमने कहा कि उसको हम परसेप्शन में डिस्कस कर लेंगे। और उनको हमने तीनों शब्दों के अर्थ बता दिए, आस्वादन, आदिनव और निस्सरण क्या होता है। मेरे बारे में था तो मेरा भी शूज के बारे में था। उसमें मैंने थोड़ा योनिसो मनसिकार भी किया कि मेरे को महंगे शूज लेने का शायद रुचि ये भी है कि मेरे पैरों को आराम मिले। तो उसमें फिर मैंने सोचा पैरों को आराम क्यों चाहिए, क्योंकि शायद थोड़ा थोड़ा वेट ज्यादा है, उसलिए पैरों में दर्द होता है, तो क्यों ना मैं वेट ही घटा लूं। तो फिर मेरे को स्पाइक शूज और कुशन वाले शूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करके मैं भी उस तरफ से निस्सरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस वाज फ्रॉम आर ग्रुप। आप म्यूट पर हैं सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अनुरागी जी, अगर आपके प्रश्न इमीडिएट रेलेवेंस के हों इसके साथ, इस डिस्कशन से, सो काइंडली आस्क देम, बट इफ दे आर जनरल क्वेश्चंस वी कैन कंसीडर देम प्राइवेट। प्राइवेट ही ठीक रहेगा। क्यों जी ये मतलब वो था जो गृहमानंद सूत्र में 10 संज्ञाएं बताई गई हैं, जी जी जब उन पर एक एक करके बिल्कुल जैसे ढंग से रीजनिंग करते हैं, जी तो जब हम पहान संज्ञा के बाद विराग संज्ञा में पहुंचते हैं, तो विराग संज्ञा के साथ वो सारी दृष्टियां, सारे रूप, वो सब, उन सबसे विरक्त होना शुरू होते हैं। तो उसी समय सब लोग के अनिभत्र संज्ञा और सब संकार्य ध्वनिक संज्ञा ये भी हावी होने लगती, जबकि हम वहां तक पहुंचे नहीं होते। ऐसा अनुभव है हम अपना। अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपका ऐसा अनुभव है तो बहुत अच्छी बात। प्रहार संज्ञा पे कैसे पहुंचे आप? पहाड़ तो वही सभी अनिच्छ हैं, अनंत हैं, और कोई भी रूप ऐसा ये नहीं है जिसमें शुभ हो। तो ये क्योंकि ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सेरेब्रल से भी ऐसे हैं, जी, ये हमारे जो सेरेब्रल अंडरस्टैंडिंग है या हमारे जीवन का सत्य है? सेरिब्रल भी है और सत्य भी है। हाँ, अगर मतलब सत्य है अब ऐसा तो दिखने लगा, अब ऐसा दिखने लगा कोई भी, जी, मतलब हम अपनी बॉडी पर ही देखें, हम ह्यूमन बीइंग है। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी काया में से सर से लेकर पांव तक कोई ऐसी चीज नहीं निकलती वो जिसको तो हम हमें दोबारा मालूम सेवन है, कर सकें। that we all know. I'm just asking a very simple question. Is this understanding resulting in nibbida? Is it resulting in freedom from cravings of various kinds? That's what I'm asking. If अभी it is, then विरक्त तो अभी sadhu विरक्त sadhu तो नहीं sadhu. बोल अभी विरक्त तो नहीं बोलते, क्योंकि विराग संज्ञा में जो हम पहुंचते हैं, जो अनुभूति होती है, वो कुछ सेकंड्स के लिए होती है, वो सस्टेन नहीं रहती है। हाँ, तो उसके ऊपर
कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है निस्सरण के लिए, कि वो निस्सरण कैसे हो उसके बारे में। बट आप समझते हैं उस बात को, तो बहुत साधुवाद आपको। विश यू ऑल द सक्सेस इन दैट वेंचर। वेरी गुड। सम्मा सती में अभी और काम करने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी अवश्य। थैंक यू। तो कैन आई चेक कि जो आपने अभी एग्जांपल सुने उसमें which ones do you consider to be accurate descriptions of indriyas of samvar and then pahan, and which ones do you consider, any one example, to be our misunderstanding of samvar and pahan? अगर आप थोड़ा एनालिसिस ऐसे बताएं then it might become clear. और आपने संवर और पहानी क्यों चुना निसरण के कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि the sutta doesn't say that, so maybe you can also explain that. No, sutta says that actually. I didn't know that. यो रूपस्य छंद राग विनयो छंद राग पहानम, पार्ट ऑफ द सुत्ता। तो वो एक्सप्लेनेशन उसका यही है कि you start with samvar and then slowly move towards pahana. That's how generally it is explained. So it is a part of the sutta. और क्योंकि अगर हम संवर नहीं कर पाएंगे तो we are adding fuel to the fire constantly. तो उसका that yeah, sorry, please go on. Sorry. चलेगा ना? So when we are practicing for example, dropping attachment to an object, जैसे आपने सुझाव दिया कि पहला तो यही कि भाई उस ऑब्जेक्ट की तरफ अगर वो नेसेसरी नहीं है तो you don't need to really interact with that object unnecessarily. So that's a kind of indriya samvar to reduce the extent of fire which is there. Because whenever you have somebody, something जिसके प्रति अटैचमेंट है या जिससे काम राग जागता है, अगर हम उसको बार बार उसके संपर्क में उसके स्पर्श होता है उस इंद्रियों से, then it only inflames the passions, ना? तो वो तो that is the first step in the process of purification of the mind from that craving. This is the samvar element. Yeah, ji. Okay. Then we have to really work towards complete cessation of that. Complete cessation is through the process of looking at it in accordance with Satipatthana Sutta, seeing the arising of it and passing away. And if it doesn't pass away and if it is strongly persisting, जैसे आपने suggestion किया था कि वो अशुभ भावना कर लो या किसी केस में मरणानुसति कर लो, अगर depending on whatever is the specific nature of that object of attachment, we can do those kind of practices ताकि वो प्रहान में हमारी मदद कर सके. So to that extent, I think that was quite okay. The issue about family and others is more complicated actually. Strictly speaking, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अटैचमेंट में डेंजर को देख लें तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि वो डेंजर इमीडिएट नहीं दिखता हमको. डेंजर अगर इमीडिएट दिख जाए तो मोस्ट ऑफ अस विल ड्रॉप दैट. बट डेंजर रिमोट दिखता है, ठीक है देखी जाएगी जब होगा. वी टेंड टू इग्नोर इट, एंड दैट्स द काइंड ऑफ पावर ऑफ डिल्यूजन. जो संस्कार है वो का not paying enough attention to the truth. So that's the vipallasa, the kind of hallucination or perversion of a system of our perception. कई जगह पे जब हम कोशिश करते हैं कि say we are enamored of clothes or shoes or jewelry, then the deep pahana will happen only when we really investigate why are we enamored of them. And we reflect deeply. One very
highly probable reason is, there are other also, highly probable reason is that good shoes, good clothes, good jewelry, they kind of make me look good. There's that attachment to the sense of self associated with the body form, external shape. So this is really, so we move into the other territory now. क्योंकि जब हम reasons की तरफ जाने लगेंगे, then we'll have to move to the territory of perception, territory of the wrong view. Ditti asava is quite often very important asava, which doesn't turn up in rag dvesh. मोह में आता है, but हम मोह को इतना डिटेल में देखते नहीं है, तो वो हमको दूसरे जो बाकी के खंड है उस तरफ ले जाता है कि उसको हमको वहां पे हमको देखना पड़ेगा कहाँ पे अटक रहे हैं. अटैचमेंट टू फैमिली है, जैसे स्पाउस, स्पेशली चिल्ड्रन, especially attachment of parents to their children, more particularly of mother. That is a very very strong element, very strong element of. And if we investigate it deeply, it is basically because we have a tendency to think that they are mine. We may say, there is a danger in attachment. We recognize there is a danger in attachment. Sabbe, pime, piye, nana, bhavo, vina. We understand all that. And we know this will happen, but it's not going to happen immediately. Or if it may happen, then we'll see. That's the kind of attitude we have. We live in the present. Abhi to theek hai na. And then when the relationships, the child grows and changes, which is quite natural, then the complications and conflict begins to arise, and we are not able to see कि क्या कारण है. It's not that the change in the child is something problematic. It is because of my attachment to the view that ये मेरा है और इसको इस तरह से ही होना चाहिए. So there is again the question of atta bhav. जो हम बच्चे को, अपने स्पाउस को, पेरेंट को मैं मेरा है, एतद मम, एसो हम अस्मि तो नहीं है, ना में एसो अत्ताति वो भी नहीं है, बट एतद मम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट ओवरवेल्म्स ऑल आवर एफर्ट्स इन दिस सरना. तो वो चीज जो है उस लेवल पे ही कटेगी, वैसे कटेगी नहीं. आप कितनी भी उसको देखते रहिए, राग जागा छूट गया, राग जागा छूट गया, उसकी जो फाउंडेशन है वो इतनी गहराई से बेस्ड है दिट्ठी आसव पे कि वो दिट्ठी आसव उतनी आराम से हटता नहीं है unless you penetrate into it. And therefore we have to use various means, various teachings. भगवान की बहुत teachings है, खासतौर पर बच्चों के बारे में. You can reflect upon them. They're very, especially about feeling, the statements which brought him a lot of criticism. Pem to hot sokom. अभी पिए तो जाए थे सोको, पिए तो जाए थी भयम. We know how much in criticism the Lord had to face in making these statements with respect to children or family. But if we reflect deeply, we know this harsh, there's a bitter truth. तो इस तरह की टीचिंग पे रिफ्लेक्ट करना और अल्टीमेटली तो अनात्म बोध को पुष्ट करने से ही ये सब चीजें हटने वाली. सो जो इस तरफ जब हम मूव करते हैं तो ऑफ कोर्स वी कैन ऑलवेज प्रैक्टिस इंद्रिय संवर, बट अल्टीमेट पहान तो तभी होगा जब हमारी पन्या इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि अनात्म बोध इतना स्ट्रांग हो जाएगा दैट वी आर एबल टू रिलेट टू थिंग्स in their true nature. And in these things, the other supplementary things operate, like teachings of the Buddha or even of great philosophers. Then the practices of various kinds, Marnanusati helps. The practices of, in Kamarag hai to Shubh Bhavana will help. And with respect to family, we have the responsibilities, but not the expectations, those statements of that kind which we hear. But those are kind of things which keep our
अटैचमेंट विद इन सर्टन बाउंड्स, वो हट नहीं पाती है। वो हटेगी तभी जब हम उसको इतनी गहराई से देख पाए कि उसका राग का जो अनुशय क्लेश है वो हट जाए। Because it's a question of a strong latent tendency which has to be really uprooted. It's a very massive task, which is going to happen only at Anagami, according to the Sayojana paradigm. Sayojana की जो template है, Kamarag and Patigga, they are going to end there. So you are including this in Kamrag, ये जो आपने अभी description दिया? Yeah, in some sense. I mean, technically it's not seen in that sense. It is seen in sense of lust. But it is a question of attachment of very deep kind. And if you can look at it in the upper Abursvayam Patigga, resistance to change. Patigga is resistance. Actually, I find very interesting that in Lord's teaching, he gives great emphasis to rag, removal of raga. Because जब किसी व्यक्ति के प्रति राग ना हो, तो उसके छूटने पे द्वेष नहीं जागेगा. So that's why second noble truth में भी वो तन्हा पौनु भविका नंदी राग सहगता की बात करते हैं. It doesn't talk of aversion, talks of attachment and delight, seeking pleasure here and there as the cause of suffering. And here also when you talk of prahana, you can see the chanda raga vinayo, chanda raga pahana, dropping of the rag, containing the rag. Because राग का जो हमारी एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी है, हेडोनिस्टिक टेंडेंसी, सुख को सीख करने की टेंडेंसी, वो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हमको बांध के रखती है. एंड वी नो दैट प्लेजेंट फीलिंग को देख पाना इतना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि वो हम उसको अच्छा मानते हैं. तो इसलिए वो प्लेजेंट फीलिंग को देख पाना विच विल कम अंडर वेदना, or pleasant perceptions को देख पाना which will come under perceptions. So we'll look at them there further and get a more deeper investigation into this. That's how I feel at the moment. If there are certain questions. So ये जो line है removal and abandonment है ना? जी जी. This is छंदराग विनय and पहान को आपने removal और abandonment कर दिया है. जी जी, ये भिक्खु बोधि ने किया बनते जी. मेरा कोई हाथ नहीं है. Your creativity in this is to मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया इसको. नहीं, एक्चुअली आपने जो अभी फ्रेमिंग की पिछले जो 10 मिनट का आपने कमेंट्री दी, दैट इज बेसिकली एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ये जो पैराग्राफ है ना, रिमूवल एंड अबैंडनमेंट ऑफ डिजायर एंड लस्ट फॉर मटेरियल फिनोमेना, दिस इज द एस्केप. जी जी, एक सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन. राइट. सो इन हाउ यू आर डिस्क्राइबिंग इट, इंद्रिय संवर भी उसमें हो सकता है प्रोबेबली एज अ स्टेपिंग स्टोन, है ना, बट इट्स टू स्ट्रांग. और फिर प्रहान, सो प्रहान इज अबैंडनमेंट. So removal, Vinay is the abstaining, ना? Vinay का concept वही है ना, abstaining from this. हाँ, Vinay is the abstaining. Okay, so आप इंद्रिय संवर को विनय बता रहे हैं, जो इन्होंने यहाँ removal बताया है. So it's not really removal in that sense. It's really just protection. Not protection, but guarding. Yeah, it is aspect of samavayama. samavayama में है ना कि unwholesome tendencies अंदर आ रही हो तो रोक दो, अंदर है तो बाहर निकाल दो. That kind of a thing. Okay. Yeah. It looks because of the understanding of Vinaya, you know, Vinaya में हम discipline करते हैं ना, Vinaya means discipline. So in that sense, Indriya Samvar is a discipline. Yeah. No, I get it. नहीं, इस issue ये है ना कि इतनी सी एक या ये 6-7 शब्दों में बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है. So it's at least for me very difficult to, you know, जी. So that's okay. Very good. That's all. Thank you. कोई और प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कृपया बताएं. बस कल से फिर हम चाहेंगे वेदना खंड की इसी तरह से चर्चा करें. सर, हाँ जी, आपने अभी ये कहा था लाइक यू नो क्लोथ्स एंड शूज, यू नो ये मुझे like it makes me feel look good and it's a kind of a sense of self. So the way I understand
gratification is कि और like इकट्ठा कर लेना, like acquisitiveness as such कि like you don't need it and you still wanted to, like इसमें sense of self, how are you talking about attachment towards your own group? Are you referring to that, or what does it exactly? ऐसा मुझे लगता है, कोई भी कपड़े खरीदता है तो क्यों खरीदता है? ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है. What is the concept there? ऐसा मुझे लगता है. I'm not saying this is the way of, perceptions can vary, of course. I see no point in accumulating 500 dresses. कितनी पहन लेंगे? भूल ही जाते हैं. That I understand, sir. Like आपने वो sense of self या like मुझे अच्छा. You can investigate. I mean, I'm not holding on to anything. तो आप बहुत कुछ नहीं करते, इसमें क्या है? We can reflect on it and find out. I mean, my analysis of it has been, because I also have my family and I see people, why they buy things, why they buy particular things, not the other things. And I can very easily see that. I mean, it's very transparent to me, absolutely. Yes, so sir. Maybe it's not true of you. I'm not saying it may be true of you. सर आप assertively नहीं बोल रहे वाली हर साहब, आप फिजिकल हार्म के रिस्क में अपने आप को डालने की तैयारी कर रहे हो. अभी दरवाजा बंद है. One second. Let me just finish. I have one more question. Sir, आपने ये जो कहा था ना, like attraction towards a person as such, then you do this samma vayamo, or you neglect this person or don't come in contact as such. Okay, that is for an outsider, I understand. When it's within your family, what does one do then? Asubha bhavana. That's what you already No, not in that way, sir. Not in that way. Like, too much of attachment. So you cannot avoid your own mother or your family members as such in that. Mother and father should be taken care of perfectly. But one doesn't have to get obsessed about it and forget about everything else in the world. That's the point. I mean, of course, we have all taken care. We are all duty bound by Buddha's teachings bound. We are all disciples of Buddha. We should take the full care, but there's no problem in that. The problem is with the obsession about it and inability to accept that our care may not be fruitful, may not be successful in the way we want it to be. Okay. And then other thing is, like, I gave an example about my dad itself, like, too much of attachment. I mean, I still miss him. I'm not saying no, but ये जो हुआ ना, after he left and after काफी सालों के बाद में I've understood, like, it's like everybody is going to leave. But at certain level I had, now that it doesn't disturb me as such. ये तो जाने के बाद में हुआ, has an experience of seeing the suffering. ऐसा नहीं है कि I have come out of everything, like, certain things only I have dropped it as such. पूरा तो ऐसा हुआ नहीं है कि maybe possible कि with something else I may be having a lot of attraction, which is true, which is quite human nature as such. So this realization is only after he left, because there was a lot of dependency which I had on him. Like, and now I feel कि even if he is not there, there's nobody to depend on anyone as such. तो ये तो काफी सालों के बाद में मुझे वो realization हुआ है. So that's fine, very good. It takes time, certainly, but what will be the culmination of this as you become better and better in this reflection and ability to accept the 5 daily reflections in their entirety? You can easily see, अगर 5 daily reflections हम सचमुच में हमारी perception का part बन जाएं, our suffering will be drastically cut down, of aging, of old age, of illness, of separation. All of them will cut down, and experiences of unpleasant feelings, unpleasant situations. That 5 reflections are so powerful. They themselves will save us from so much of suffering if we are really imbibe them. They become a part of my day-to-day experience and day-to-day acceptance. I have no problem whatsoever in accepting them and living accordingly. If I live accordingly, I have done a great movement in the path to Dhamma. So what I'm trying to say now, sir, like, okay, but I don't
if something goes wrong with my own family member, I'm not too sure. There's a question mark whether I've really understood this kind of a suffering and I've become very disenchanted as such. That is what I was coming to. There is an understanding with my father now. It doesn't disturb me. I'm not sure about it as I experience. I don't know what the experience will teach me or what the conditions will be, is what I'm trying to say. But there is no fear as such. That's so one gains confidence by repeated reflection, by practice. One gains confidence like that only. Suddenly तो नहीं हो जाएगा ना, और धीरे-धीरे ही होता है, and it depends on intensity of one's practice. That's okay. That's the way it is for all of us. It is like that. You know? So some people have a lot of quote unquote parmi, so they are able to get through quickly with this kind of suffering, but not other kind of suffering. We all have our own special recipes of suffering. So for me, it may not be Rūpa, but it may be perception or it may be something else. So we have to work. That's why we are doing this so much elaborate exercise. जिसपे आप लोगों को काफी कईयों को कष्ट भी हो रहा है कि क्यों मैं परेशान कर रहा हूं इतना. The idea is that all of us don't have the same set of weak spots. We have different weak spots. We have different khandas which hold on, which become our cause of suffering. So we have to identify that and then work on it accordingly. नहीं तो हम गलत दवा खाते रहेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा. ये बात इसलिए इतना कर रहे हैं कि एक एक करके तोड़ तोड़ कर देख लें. ठीक है. Thank you. Okay, thank you. Bhante ji.